Historians have aptly noted that Jinnah kept his notion of Pakistan ambiguous, more promised homeland and less concrete reality, a tactical maneuver that ensured its clarion call would appeal to the broadest segment of the Muslim polity. In speeches, he made liberal use of Islamic imagery and motif, describing his fledgling country as a state, a Muslim state, and at least once, even as the premier Islamic State. And yet, he had long maintained that religion is strictly a matter between God and man, not to mention his emphatic declaration that Pakistan is not to be a theocratic state, to be ruled by priests with a divine mission. But then, with his sudden and untimely demise, the very ambiguity that had sustained the movement for the country's independence became the cause of a crisis of identity that continues to this day. Thankfully though, Jinnah left us something very crucial before his passing, a candid peek into his vision of what a citizen was to mean. Addressing the Constituent Assembly on August 11, 1947, he reminded its members that they were now a sovereign legislative body, and that before them lay an onerous task, drafting the future constitution. With this in mind, he then stated, in no uncertain terms, that moving forward, the religion of any individual would have nothing to do with the business of the state, that they were starting with the fundamental principle that they were all citizens and equal citizens of one state, so that one day, the angularities of the majority and the minority would, in a political sense, vanish. This was to be Jinnah's citizen equal in status, and therefore equal in rights and privileges. In February 1948, he would reiterate this exact sentiment in a radio broadcast, plainly declaring that we have many non-Muslims, Hindus, Christians and Parsis, but they are all Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizens. However, a year later, when the same Constituent Assembly passed the Objectives Resolution, it relinquished its sovereignty to divine authority and stated that while the principle of equality would be fully observed, it would be applied only as enunciated by Islam. This qualifier is monumental, for it implies that the concept of equality prescribed in Islam is in some manner different from the everyday meaning of the term. Today, we have three distinct classes of citizens. Context is needed to understand this seismic shift in orientation. Jinnah's repeated insistence on equality of citizens had created considerable furor among sections of the ulama, led chiefly by Maulana Maududi of Jamiat-i-Islami and Atala Shah Bukhari of Majlis-e-Urdu. Although they had previously decried the very movement for Pakistan, once the country had been established, they decided not only to migrate to it but to also take an active role in its political affairs, launching vigorous campaigns for a constitutional framework based on a conformist version of Sharia. For Jinnah and his modernist compatriots, equality of status appears to have been a natural and rational corollary of citizenship in a democratic state, especially one that embodied, in his own words, the essential principles of Islam. For Maududi and Shah Bukhari, this had always been a heretical position, since it came into sharp conflict with the traditional interpretations they favored, which treated non-Muslims, not as equal citizens, but as a separate class altogether, the al-Azima or Zimmis, who, while being eligible for protection upon payment of jizya, or military participation in lieu thereof, remained subject to numerous structural restrictions, including a strict bar on holding key, most say any, positions of authority. The real bone of contention thus was whether the al-Azima could be reconceptualized in light of a social contract based on democratic participation. Jinnah obviously thought they could, but simply did not get his way. This explains why Sri's Chandra Chattopadhyay, the East Bengal-based leader of the then opposition, would remark that what he heard in the Objectives Resolution was not the voice of the great creator of Pakistan, but that of the ulamas of the land. He chastised the majority for backstabbing Jinnah so soon after his demise by virtually declaring a state religion, and argued that sovereignty must rest with people and not with anyone else, for in a country where different religions live, the state must respect all religions, no smiling face for one and askance look for another. Fearing that the resolution would condemn non-Muslims to a perpetual state of inferiority, Chattopadhyay pleaded for an alternative that was identical to the one offered by Jinnah: let us form ourselves as members of one nation. Let us eliminate the complexes of majority and minority.
Let us treat citizens of Pakistan as members of one family and frame such a constitution as may not break this tie, so that all communities may stand shoulder to shoulder on equal footing in time of need and danger. By introducing the religious question, he warned, the differences between the majority and the minority are being perpetuated, for how long, nobody knows. Time vindicated Chattopadhyay, and in quick succession. By 1950, a disillusioned Jojendra Nath Mundal, reportedly the only non-Muslim to vote in favor of the resolution, resigned from the law ministry and migrated back to India, where he died a political outcast. By 1953, anti-Ahmadi protests erupted in Punjab, triggering our very first martial law, and paving the way for their excommunication in 1974. Today, we have three distinct classes of citizens: the first-class Muslim, the second-class non-Muslim, and the third-class Ahmadi. One is forced to say third-class for they face additional legal strictures compared to second-class non-Muslims. Equality of status, and the non-discrimination it guarantees, stands at the core of contemporary understandings of international human rights, which is why our country very rightly and very eagerly, although a bit selectively, champions it on international forums. For these moral protestations to have any force, however, must those very ideas not first be applied at home? Jinnah's citizens need not be a dream of Maro's past. As inheritors of their constitution, the people of Pakistan are wholly empowered to resuscitate his ideals, or, in the spirit of true constitutionalism, formulate their own. The writer is a barrister. Published in Dawn, January 21, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. तारीखदानों ने मुनासिब तौर पर नोट किया है कि जिन्ना ने पाकिस्तान के बारे में अपने तस्वुर को मुबहम रखा, ज़्यादा वदाशुदा वतन और कम ठोस हकीकत, एक हिकमत अमली जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी वजाहत मुस्लिम सियासत के वसीतर हिस्से को मुतासिर करेगी। अपनी तकारीर में उन्होंने इस्लामी तस्वुरात का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए अपने नौज़ायदा मुल्क को एक रियासत, मुस्लिम रियासत और कम अज़ कम एक बार अहम इस्लामी रियासत के तौर पर बयान किया। इसके बावजूद वो एक तवील अरसे से ये कहते रहे हैं कि मज़हब मुकम्मल तौर पर खुदा और इंसान के दरमियान का मामला है। उन्होंने अपने इस वाज़े ऐलान का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत नहीं होना चाहिए कि एक खुदाई मिशन के साथ पादरियों के जरिया हुक्मरानी की जानी चाहिए। लेकिन फिर इनकी अचानक और बेवक्त मौत के साथ वही इब्हाम जिसने मुल्क की आज़ादी की तहरीक को बरकरार रखा था, शनाख्त के बहरान की वजह बन गया जो आज तक जारी है। शुक्र है कि जिन्ना ने अपनी वफात से पहले हमें एक बहुत ही अहम चीज़ छोड़ी थी, और वो ये थी कि एक शहरी का क्या मतलब होता है। इस बारे में उनके विजन की एक वाज़ेह झलक। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए उन्होंने इसके अरकान को याद दिलाया कि वो अब एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं और उनके सामने मुस्तकबिल के आइन का मुसव्वदा तैयार करना एक मुश्किल काम है। इस बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए किसी भी फर्द के मजहब का और रियासत के कारोबार से कोई लेना देना नहीं होगा कि वो इस बुनियादी उसूल के साथ आगाज कर रहे हैं कि वो तमाम शहरी और एक रियासत के मसावी शहरी हैं, ताकि एक दिन अक्सरियत और अक़लियत की हम आहंगी हो। सियासी मानों में गायब ये जिन्ना का शहरी होना था, हैसियत में मसावी और इसी वजह से हुकूक और मुराद में मसावी। फरवरी 1948 में उन्होंने एक रेडियो नशरियात में इसी एहसास का इयादा किया और वाज़े तौर पर ऐलान किया कि हमारे पास बहुत से गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, ईसाई और पारसी, लेकिन वो सब पाकिस्तानी हैं। वो किसी भी दूसरे शहरी की तरह हुकूक और मुराद से लुत्फ अंदोज होंगे। ताहम एक साल बाद जब इसी दस्तूर साज असेंबली ने करारदाद मकासद मंजूर की तो इसने अपनी हाकमियत इलाही इख्तियार के हवाले कर दी और कहा कि अगरचे मुसावात के उसूल पर पूरी तरह अमल किया जाएगा, लेकिन इसका इतलाक सिर्फ इस्लाम की तरफ से बयान करदा नहीं किया जाएगा। ये क्वालिफायर यादगार है क्योंकि इसका मतलब यह है कि इस्लाम में मुसावात का तस्वुर किसी न किसी तरह इस इस्तिलाह के रोज़मर्रा के मानी से मुख्तलिफ है। आज
हमारे पास शहरियों के 3 मुख्तलिफ तबकात हैं। समत में इस ज़लज़ले की तब्दीली को समझने के लिए सियाक व सबाक की ज़रूरत है। शहरियों की मसावात पर जिन्ना के बार बार इसरार ने उलमा के कुछ हिस्सों में काफ़ी हंगामा बर्पा कर दिया था, जिनकी क़ियादत जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी और मजलिस अहरार के अताउल्लाह शाह बुखारी कर रहे थे। अगरचे उन्होंने पहले पाकिस्तान के लिए तहरीक की मजम्मत की थी, लेकिन मुल्क के क़याम के बाद उन्होंने न सिर्फ इसकी तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया बल्कि इसके सियासी मामलात में भी फ़ाइल किरदार अदा करने का फ़ैसला किया और शरीयत के मुताबिक आईनी फ्रेमवर्क के लिए भरपूर मुहिम शुरू की। जिन्ना और उनके जिद्दत पसंद हमवतनों के लिए हैसियत की मसावात एक जमहूरी रियासत में शहरियत का एक फितरी और मंतकी नतीजा मालूम होता है, ख़ास तौर पर वो जो उनके अपने अल्फाज में इस्लाम के बुनियादी उसूलों को ज़ाहिर करता है। मौदूदी और शाह बुखारी के नज़दीक ये हमेशा से एक मकरूह मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि ये उन रिवायती तशरीहात से शदीद मुतसादिम था जिनमें गैर मुस्लिमों को मसावी शहरी के तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एक अलहदा तबके के तौर पर देखा जाता था। अहल ज़मा ज़मी जो जिज़िया इसके बदले में फ़ौजी शिरकत की अदायगी पर तहफ़्फ़ुज़ के अहल होने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ थे, मुतअद्दिद साख्ती पाबंदियों के ताबे रहा, जिसमें इख्तियारात के कलीदी ज़्यादातर कहने वाले ओहदों पर फाइज होने पर सख्त पाबंदी भी शामिल है। इस तरह तनाज़ा की असल वजह यह थी कि क्या जमहूरी शराकत दारी पर मबनी समाजी मुआहदे की रोशनी में अहल ज़मा की तश्कील नो की जा सकती है। जिन्ना ने यकीनन सोचा था कि वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। इससे पता चलता है कि मशरक़ी बंगाल में मुकीम इस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शरीयस चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह तबसरा क्यों किया था कि उन्होंने करारदाद मकासद में जो कुछ सुना वो पाकिस्तान के अजीम खालिक की आवाज़ नहीं था, बल्कि मुल्क के उलमा की आवाज़ थी। उन्होंने जिन्ना की वफ़ात के फ़ौरन बाद उनकी पीठ में छर्रा घोंपने पर अक्सरियत को तनक़ीद का निशाना बनाया और दलील दी कि हाकिमियत लोगों के पास होनी चाहिए न कि किसी और के पास, क्योंकि एक ऐसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते हैं, रियासत को तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, एक के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं और दूसरे की तलाश नहीं करनी चाहिए। इस खौफ से कि करारदाद गैर मुस्लिमों को दायमी एहसास कमतरी की तरफ धकेल देगी, चट्टोपाध्याय ने जिन्ना के पेश करदा मुतबादिल की वकालत की, आइए हम खुद को एक कौम के रुकन के तौर पर तश्कील दें। आइए हम अक्सरियत और अक़लियत की पेचीदगियों को ख़त्म करें। आइए हम पाकिस्तान के शहरियों के साथ एक ख़ानदान के अफराद की तरह बर्ताव करें और ऐसा आइन बनाएं जो इस बंधन को न तोड़े ताकि ज़रूरत और ख़तरे की घड़ी में तमाम बरादरियां मसावी बुनियादों पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों। उन्होंने मुतनब्बे किया कि मजहबी सवाल पेश करके अक्सरियत और अक़लियत के दरमियान इख्तिलाफ़ात को बरकरार रखा जा रहा है, कब तक कोई नहीं जानता। वक्त ने चट्टोपाध्याय को साबित कर दिया और एक के बाद 1950 तक मायूस जोगिंदर नाथ मंडल, जो मुबैना तौर पर करारदाद के हक में वोट देने वाले वाहिद गैर मुस्लिम थे, ने वजारत कानून से इस्तीफ़ा दे दिया और हिंदुस्तान वापस चले गए, जहां वो सियासी तौर पर खारिज हो गए। 1953 तक पंजाब में अहमदियों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, जिसके नतीजे में हमारा पहला मार्शल लॉ लगा और 1974 में उनके खात्मे की राह हमवार हुई। आज हमारे यहाँ शहरियों के 3 मुख्तलिफ तबकात हैं, अव्वल दर्जे के मुसलमान, दूसरे दर्जे के गैर मुस्लिम और तीसरे दर्जे के अहमदी। एक को तीसरे दर्जे का कहने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि उन्हें दूसरे दर्जे के गैर मुस्लिमों के मुकाबले में इजाफी कानूनी सख्तियों का सामना करना पड़ता है। हैसियत की मसावात और इसमें अदम इम्तियाज़ की ज़मानत बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक की मुआसिर तफ़हीम की बुनियाद है। यही वजह है कि हमारा मुल्क बैन अल-अक़वामी फ़ोरमों पर बहुत सही और बहुत शौक़ से, अगरचे थोड़ा सा मुंतखब तौर पर, इसकी हिमायत करता है। ताहम इन इख़्लाक़ी नज़रियात को किसी ताकत के हुसूल के लिए क्या इन नज़रियात को पहले घर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए? जिन्ना के शहरियों को माजी का ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आइन के वारिस होने के नाते पाकिस्तान के अवाम उनके नज़रियात को दोबारा कायम करने, हकीकी आइन पसंदी के जज्बे के तहत अपनी तश्कील देने के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मज़मून निगार बैरिस्टर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 21 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary.
youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.